Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video, we will be discussing important current affairs for 13th May. The session will be quite interesting students. In this video, we will be talking about RGI. They have released 3 reports that are based on CRS, SRS and MCCD for 2021. Why we will be talking about here the life expectancy in India in various states. Then we will be talking about 3 schemes that has recently completed 10 years of providing social security cover. Next thing we will be talking about Ladakh, which has recorded the world's highest snow leopard density with 477 snow leopards found in Ladakh. Next thing we will be talking about non-ferrous metals recycling ecosystem that has been recently launched in India. All these things and many more will be discussed in this video, so stay tuned with us till the end. Students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning. And students, if you are new to our channel, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Let's start with national affairs students. RGI. What is RGI? Registrar General of India, right? This comes under the Ministry of Home Affairs. It has released 3 reports that are based on CRS, SRS and MCCD 2021. Let's go by one. What is CRS? CRS is your civil registration system. Civil registration system. SRS, it is your sample registration system, and MCCD, it is your medical certification of cause of death, right? So these are the 3 reports that has been recently released, and first thing, let's talk about them only. Here, this CRS, this is the record of all the registered deaths and the births in India. That is your CRS, civil registration system. SRS, this is a survey based estimate of the births and deaths, and it tries to cover the unregistered births and deaths as well, making it a vital component for the CRS data, right? So SRS contains all the deaths and births that are not registered in CRS. Then MCCD, it captures a small fraction of the CRS deaths where deaths are medically certified, right? So these are the 3 reports that has been recently released. Take a note of this. If we talk about these reports, only here you can see if we talk about it, we are seeing that we know that death certificate and your birth certificate, they are critically important, right? But there are certain deaths and births also that are not registered, so they should also be counted in the survey while taking the account for all the number of people living in India, right? Then we are talking about the life expectancy in India. It has dropped, right? Earlier, if we talk about this, the life expectancy at birth has been estimated at 69.8 years between 2017 and 2021, right? And the urban, if we talk about specifically in the urban areas, the experience this urban areas, it has experienced a decline of 0.3 years, whereas if we talk about rural areas, the decline is just 0.1 year, right? First thing, take a note of this. Second, apart from this, if we talk about this MCCD report, it counted 413,518 COVID-19 deaths in 2021 and 1,60,000 deaths in 2020. Apart from this, if we talk about the death rate and birth rate, in 2021, the death rate in rural areas increased from 6.4 to 7.9, while in cities it increased from 5.1 to 6.6 between 2020 and 2021 respectively. If we talk about the birth rate, it also saw a decline at all India level, dropping from 36.9 in 1971 to 19.3 in 2021. Right.
Take a note of this. Similarly, if we talk about the maternal mortality ratio, MMR, right? If we talk about the maternal mortality ratio, if we specifically talk for Assam, it has dropped from 195 to 167 lakhs, 167 death per lakh live births, right? If we talk about infant mortality ratio, right, of the country, it has declined from 39 per thousand and it has declined to just 27 per thousand live births in 2021. Correct? Take a note of this. Then apart from this, students, if we talk about the life expectancy in India, we are seeing also a drop in this life expectancy. We just saw that the expectation of life at birth for India has dropped for the first time in 50 years, registering a decrease of 0.2 years in a year. Right? Very important. Also, the life expectancy and birth were registered highest in Delhi at 73 years for males and in Kerala for females at 77.9 years. Right? The lowest was registered in Chhattisgarh, that was at 62.8 years for male and 66.4 years for female. Right? So these are some reports that you need to remember. Moving on, next we are talking about PMSBY, PMJJBY, APY. They have completed 10 years of providing social security cover. Right? What are these schemes? These are the three schemes. PMSBY, it is your Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana. PMJJBY, it is your Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana. And APY is your Atal Pension Yojana. These schemes were launched on 9th of May 2015 and recently they have completed 10 years. Right? All these schemes, they are affordable financial they provide affordable financial protection to all the individuals, specifically in the underserved and vulnerable sections of the society. If we talk about these schemes one by one, first is your Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana. This scheme is designed to provide life insurance cover for death due to any reason. It is managed by Life Insurance Corporation and here the age limit is 18 to 50 years with accounts in participating banks or post offices can join the scheme by consenting to auto debit and the cover shall be for 1 year period stretching from 1st of June to 31st of May. Second is your second scheme is Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana. If we talk about this scheme, the purpose of this scheme is to provide cover of up to 2 lakh rupees for accidental death or disability at an affordable premium of less than 2 rupees per month and the age limit here is from 18 to 70 years. Third scheme, and one more thing, this scheme is managed by whom? It is managed by Ministry of Finance, right? And premium to be payable here is 20 rupees per annum per member. Then third is your Atal Pension Yojana scheme. This, if we talk about this Atal Pension Yojana, the purpose of this scheme is to create a universal social security system for all Indians, especially for the poor and the underprivileged and the workers in the unorganized sector. It is managed by PFRDA and here the age limit is 18 to 40 years. Correct? So these are the three schemes that has been recently completed 10 years, that was launched by Prime Minister Narendra Modi on 9th of May in 2015. Next news, students, is about snow leopard, right? Ladakh has recorded the highest population density with 477 snow leopards that were found in Ladakh. What is the scientific name for snow leopard? It is Panthera uncia. Panthera uncia. This is the name of the scientific name of snow leopard and it was highest density was found in Ladakh, that is 477. This data was released by Wildlife Institute of India and New Delhi based National Tiger Conservation Authority. Right? Next, and if we talk about India as a whole, the total population estimated is at 709 individuals. Correct? If the question asked that where in Ladakh these snow leopards density was found, it was specifically in Hemis National Park, that is in Ladakh. Next is Union Minister G. Kishan Reddy has launched a portal that will boost the non-ferrous metal recycling ecosystem. Right? I repeat, G. Kishan Reddy, right, our Union Minister of Coal and Union Minister of Mines launched a non-ferrous metal recycling website and stakeholders portal that will strengthen India's non-ferrous metal recycling ecosystem. This has been developed under the National Non-Ferrous
metal scrap recycling framework that will promote resource efficiency, right? It will empower the stakeholders and will also enhance the transparency. Correct. Also, you will be seeing in this portal performance benchmarking mechanism will be used to evaluate the sector efficiency. It will provide support systems for standardization, certifications, and various awareness campaigns. Also, a national registry for dismantlers, recyclers, traders, collection centers will be provided here. Next is CDOT and CSIR's arm NPL, that is your National Physical Laboratory, right? They both have signed a memorandum of understanding that will advance the quantum and classical communication technologies. So in simple term, this collaborative framework will be focusing on research and development and delivery of the next generation communication technologies. Here this COT, they will bring their expertise in network, IoT and quantum communication, and CSIR's arm National Physical Laboratory, they will focus in scientific measurement, standardization and traceability of the international system of unit. Moving on, next is international affairs students. World Bank Land Conference 2025 was held in Washington DC, USA. I repeat, World Bank Land Conference, right? And where was this held? This was held in Washington DC, USA. This is the headquarter for World Bank also. It was held from 5th to 8th of May, right? And Washington DC, it has been organizing this World Bank Land Conference for the past 20 years, the aim of which is to bring together 1000 participants from wide range of sectors such as government, various academias, civil societies, private sectors, and work on it. Then there is a theme on which this conference was held, that is securing land tenure and access for climate action, moving from awareness, right? Take a note of this. During this conference, our country India was honored as a country champion under the leadership of Vivek Bhardwaj. This recognition is for India's global leadership in inclusive land governance and grassroots empowerment. Take a note of this. So India was honored as a country champion during this World Bank's Land Conference that was held in Washington DC. Moving on, next, if we talk about this conference, global praise for India's rural governance models was held here. As we saw, we were honored as country champion here. Moving on, next is Pakistan. Pakistan has launched Operation Bunyan al-Moras against India. We know India launched a mission against Pakistan that was named as Operation Sindoor, right? That targeted 9 locations by launching 24 missiles against Pakistan, right? And even in POK. Now, Pakistan in retaliation launched this Operation Bunyan al-Moras, right? It was against India. Remember this. Moving on, next is banking and finance. RBI has relaxed the FPI norms on corporate bonds to boost the foreign inflows. I repeat, Mumbai, Maharashtra based RBI, they have relaxed the norms for the foreign portfolio investors, that are FPIs, to buy the local corporate bonds by removing the short-term debt instrument limit and the concentration limits that will provide greater ease for the investment of these FPIs, right? These new norms, they will be coming into effect immediately. If we talk about them, under this previous framework, the investment by these FPIs in corporate bonds with maximum residual maturity period of 1 year was capped at 30% of the total investment of FPI in corporate bond. These limits were applicable on the end of the day basis. First thing first, remember, as I mentioned again, that now according to RBI, they have relaxed the norms for these FPIs to buy corporate bonds by removing the short-term debt investment limit, which was earlier 1 year, and it was kept at 30% of the total. Then apart from this, the investment in corporate debt securities by FPIs was limited at 15% of prevailing investment limit for long-term FPIs and 10% for others. And now with the removal of these restrictions, FPI will be able to hold a larger share of individual bond issues and invest freely across the maturity curve, that is with less than 1 year to maturity. Right, so these are the changes. Take a note of this. Next, now see, one term is, there are two terms here, that is short term investment. It means putting restriction on the portion of these FPIs, right, that will mature within 1 year. And then other is, second is, you see here the concentration limit, right? It restricts the extent to which these FPI, they could invest in these debt instruments of a single corporate issuer to mitigate the risk of over exposure, right? So take a note of that. Moving on, next is Bhutan has launched the world's first national
cryptocurrency tourism payment system. That means with the help of cryptocurrency, you will be able to pay, right, for tourism. And it is Bhutan that has launched this initiative. You can see here, Bhutan introduced the world's first national cryptocurrency tourism payment system through a collaboration with Binance Pay, a subsidiary of Binance Holding, and DK Bank of Bhutan, right? That is Bhutan's first fully digital bank. This initiative will enable the travelers to use cryptocurrency for services payments, promoting ease of transaction and advancing financial inclusion throughout their visit to Bhutan. Correct. Here you will be seeing cashless travel experience. You can pay using over 100 cryptocurrencies that include your BTC, BNB coin, that is Binance coin, USDC, that is United States dollar coin, right, to pay for your airline ticket, visa fees, hotel bookings, tour guides, local purchases, and many more. And you can pay directly using the QR code there. Correct. Take a note of this. Next is RBI has recognized FIMMDA as SRO for financial markets. What is this FIMMDA? It is your Fixed Income Money Markets and Derivatives Association. Correct. So RBI recognized this FIMMDA as a SRO, self-regulatory organization in the financial market regulated by RBI. With this recognition, this will enhance the authority of FIMMDA to regulate the member conduct and enforce fair practices in the financial markets under their review. Right, if we talk about this recognition of SRO, that is self-regulatory organization, right, as an SRO, this organization, that is FIMDA, they must be a not for profit company with a minimum net worth of 10 crore rupees and a diversified shareholding of more than 10% of their paid up share capital. Next is economy and business students. Porter Company became the India's third unicorn of 2025 by raising $200 million in Series F round. Right. So Porter, what does this Porter do is this will help you to send your goods from one location to another. The goods can be even a single pen or a paper or basically your any small goods to any big goods. Right. So this Porter, it became India's third unicorn. Right. What is a unicorn? When a market cap of an organization crosses $1 billion. Correct. So Porter became the India's third unicorn of 2025 by raising $200 million in the Series F funding. Correct. Take a note of this. Very important. This Series F funding, this is the 6th round of funding. Correct. Next is Karnataka and InSpace. They have recently signed 2 memorandum of understandings that will establish Space Manufacturing Park and Center of Excellence for Space Technologies and Public-Private Space Manufacturing Park. What this will do is this will promote manufacturing in space sector. It will promote research and development of various goods in the space sector, right? And these initiatives, they all align with the India's space policy of 2023 that aims to promote innovation and support the state's new space ecosystem. Next is acquisition and mergers. Japan's SMBC, they have bought 20% stake in Yes Bank for another 13,483 crore rupees. Right, this SMBC, it is Japan's second largest banking group, and they have acquired 20% stake in Yes Bank for 13,483 crore rupees. Right, and as a part of transaction here, SBI will be divesting 13.19% stake in Yes Bank at 21.5 rupees per share for 8,889 crore rupees. Correct. Next is Science and Tech. Elon Musk's Starlink company, they have received approval to launch satellite internet service in India, and this Starlink, they will be partnering with Jio and Airtel in India in order to provide this satellite services in India. Correct. So recently the Department of Telecommunication, they have issued a letter of intent to Starlink, right, to provide satellite internet in India so that they can commence or they can start their commercial operations in India. This development comes nearly 3 years after Starlink first applied for an operator license. Moving on, next is Virat Kohli has retired from Test cricket after 14 years Test career. Right, Virat Kohli, we all know, very famous Indian cricketer. Right, he is 36 years of age, played 123 Tests, scoring 9,230 runs, including 30 centuries and 31 half centuries. Right, he made his debut in Test cricket in Jamaica in 2011 against West Indies. Remember, he was also honored as the ICC
Cricketer of the Year in 2017 and 2018. Apart from this, if we see, he was also honored with multiple awards such as your ICC ODI Player of the Year in 2012, 17 and 18. Then he was honored with Arjuna Award in 2012. Then Padma Shri, that is India's fourth highest civilian award, in 2013. Then he was honored with Rajiv Gandhi Khel Ratan Award, right, in 2018. Then awarded with the Wisden Leading Cricketer of the World in 2018 also. Moving on, next, Brazil. Brazil will host the FIFA Women's World Cup in 2027. I repeat, FIFA, they have announced that Brazil, right? Brazil is also having the presidency of BRICS as of now, right? So coming back, Brazil, they will be hosting the FIFA Women's World Cup 2027. This decision was made at the 74th FIFA Congress that was held in Bangkok, Thailand. This event will take place from 24th of June to 25th of July in 2027, and Brazil is the first country to host FIFA Women's World Cup in South America. Moving on to books and author, students, H.P. Sarma's book, that is India at 2047, Leading the Global Economic Order, it has been recently released, right? And this book is basically aiming at the envisions of India's growth to become global economic leadership by its 100th year of independence, that is 2047. Hence, it is said India at the rate of 2047. Next is important day, students. World Migratory Bird Day observed on 10th of May. This day is generally observed on the second Saturday of May and October month. That means twice this day is observed in a year, that focuses on raising awareness about the challenges that are faced by the migratory birds, and it encourages actions to conserve their habitat. So it is observed on 10th of May this year, and again it will be observed on 11th of October this year. There is a theme also, students. Creating bird friendly cities and communities is the theme here. Next is International Argania Day. It is observed on 10th of May. This day is observed basically to raise awareness about the major role of the argan tree, that is a native species of the sub-Saharan region of Morocco that grows in arid and semi-arid areas. The theme for this day is the argan tree conservation. This is the theme here, right? Take a note of it. Moving on, next is National Technology Day, observed on 11th of May. This day is observed to raise awareness about the technology. This day is observed by the Technology Development Board, observed on 11th of May, and it is focusing on the participation of various scientists, industry leaders, academic institutions, policymakers, and startup founders, right? And this year it was the 27th edition of this day that was observed. Next, you can see here theme Yantra. Yugantra for advancing new technology research and acceleration is the theme here, right? Next is International Day of Vaishak or Buddha Purnima, observed on 12th of May. This day is observed on the full moon in May month, right? And this is to promote the Lord Buddha's teaching and foster a global community or global cultural harmony. This year it was observed on 12th of May, right? And this marks 2587th birth anniversary of Gautam Buddha. First time this day was observed in the year 2000. So that's all for the day, students. One more thing you need to remember is about state news. That is UP's Chief Minister Yogi Adityanath has unveiled UP agrees and AI Pragya with World Bank support. Correct? So two initiatives, UP agrees and AI Pragya. And in the picture you can see Yogi Adityanath ji and Ajay Banga, the president of World Bank. Here you can see Ajay Banga has, along with UP's Chief Minister Yogi Adityanath, has launched these two initiatives. First is UP Agrees. This is an initiative with an aim to revolutionizing the agriculture in the 21 districts of Bundelkhand and Purvanchal regions that will enhance productivity, advance, and it will promote advancement, technology based farming, research and development in the sector, right? And this UP Agrees project will cost 4,000 crore rupees, that will receive 2,737 crore rupees as a loan from World Bank over a period of next 6 years, and rest amount will be contributed by the
UP government. So this is UP agrees. Second is your AI Pragya. This aims to build a robust artificial intelligence talent base by training 10 lakh youths across UP, equipping them with the digital skills that are necessary to thrive in the emerging technology sector. The program will provide certification in the key domains such as AI, machine learning, data analytics, and cybersecurity that will increase the employment opportunities here. Right, so take a note of these two initiatives, students. Right, they can be asked in your exam. So that's all for the day. Now students, let's move to some revision part, then we'll proceed to the homework section. Next, in Feb, Union Minister for Labour and Employment Dr. Mansukh Mandaviya chaired the 237th meeting of the Central Board of Trustees Employees Provident Fund in Delhi. Question asked here is, what is the annual rate of interest recommended by CBT on this Employees Provident Fund subscription for FY25? What is the interest rate? It is 8.25%. Next, in March, Central Public Sector Enterprise Dash and Dash were upgraded to Navratna status by Department of Public Enterprise. So, it is Indian Railways Catering and Tourism Corporation, that is IRCTC, and IRFC. They were upgraded to Navratna. They became 25th and 26th. Which is 26th? IRCTC, and 26th is IRFC. Next, how much funding that the Government of India approved for the Arunachal Frontier Highway project, making it the largest road project ever sanctioned in India. It is 42,000 crore rupees. Next, identify the channel that was recently launched by Prime Minister Narendra Modi at NXT Conclave in Delhi. It is NewsX World. Next, in Feb, Chirang Ripu, the elephant reserve in Assam, was designated as the 8th national park in the state by the government of Assam. Question asked is, it was named as Dash after a Bodo legend who fought in the Anglo-Bhutan War of 1865. So it was named as Sikhna Jwalao National Park. Next, where was India's world's first peace center inaugurated in March under the leadership of founder of Amisha Vishwa Bharati, Jain Acharya Lokesh Muni. So, where was India's first World Peace Center inaugurated? It was inaugurated in Gurugram, Haryana. Very important question, students. Take a note of it. Next, which state introduced the Abua budget for the FY26 amounting to 1,45,000 crore rupees, symbolizing its commitment to the welfare of its people? It is Jharkhand state. Next, what is the total budget amount presented by Bihar's Deputy Chief Minister and Finance Minister Samrat Chaudhary for FY26? So what is the total budget? It is 3.17 lakh crore rupees. Next, which ministry issued the guidelines for implementing 5 pilot projects in the transport sector launched by Government of India to use hydrogen fueled buses and trucks under the National Green Hydrogen Mission? So which ministry issued guidelines here? It was Ministry of New and Renewable Energy. Next, where was India's first AI-powered solar manufacturing line inaugurated by Union Minister for New and Renewable Energy Prahlad Joshi ji? So where was this first AI-powered solar manufacturing line inaugurated? In Gujarat state. Next, what is the total budget presented by Mizoram's Chief Minister Pulal Dahoma for FY26 in the State Legislative Assembly? It is 15,198.76 crore rupees, and it has been allocated for the implementation of state scheme, that is Bana Kea scheme, that is your hand holding scheme. Next is, name the Geo-Heritage application launched by Union Minister for Coal and Mines G. Kishan Reddy during the 175th Foundation Day celebration of the Geological Survey of India on 4th of March. So it is Bhu Virasat. Correct? He unveiled a commemorative plaque as well as a special postal cover to honor 175 years journey of Geological Survey of India. Next, mention the initiative that was launched by the Ministry of Panchayati Raj in March to enhance women participation, safety and leadership in local governance. It is Model Women Friendly Gram Panchayat. The objective of this initiative is to establish at least one model Gram Panchayat in each district in India.
Next, identify the organization that in collaboration with Ministry of Housing and Urban Affairs and Institute for Global Environment Strategies organized the 12th Regional 3R and Circular Economy Forum in Asia and Pacific held in Rajasthan from 3rd to 5th of March. It is United Nations Center for Regional Development. Next, in March, Niti Aayog, in collaboration with Dash, launched the Frontier Tech Hub and the strategic paper Quantum Computing National Security Implication and Strategic Preparedness to support India economic and social growth. So, Niti Aayog, in collaboration with Data Security Council of India. Next, Union Minister for Finance Nirmala Sitharaman and Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary has launched new credit assessment model based on digital footprint scoring in March 25. The model aimed at supporting which sector? It is MSME sector. Next, which of the following organizations along with India SME Forum launched a Million Women Arise initiative in March to empower women entrepreneurs in India? So it is which organization? It is Niti Aayog. Next, in March, the Cabinet of Assam renamed Northeast India's first electronic city in Jagi Road, Morigaon district as Ratan Tata Electronic City to honor the late Ratan Tata ji. Next, name the power distribution company that partnered with Central Electricity Authority under the Ministry of Power to host the 5th edition of Lineman Divas on 4th of March. So, which is that power distribution company? It is Tata Power Delhi Distribution Limited. Next, what is the total outlay of Nagaland state budget for the FY26 as presented by Chief Minister Neiphiu Rio in March 2025? It is 24,849 crore rupees. And 5 crore rupees has been allocated for Nagaland Skill Mission. Next, which of the following union territories presented 1.12 lakh crore rupees budget for FY26 with a focus on a zero deficit plan in March 2025? It is Jammu and Kashmir. Next, Madhav National Park of which state was recently declared as the 58th Tiger Reserve of India, also making it the 9th Tiger Reserve in that state? It is Madhya Pradesh. Next, in March, Alpha Tokol Engineering Service Private Limited delivered the first rear fuselage to Hindustan Aeronautics Limited for Mark 1A light combat aircraft version. Right? And these are developed by Hindustan Aeronautics Limited. Next, what was the total budget outlay presented by the Karnataka Chief Minister Siddaramaiah for FY26 in March 2025? It is 4.09 lakh crore rupees. Next, name the initiative launched by the government of Punjab in March to protect women from violence on the eve of International Women's Day. Right? So, what is the name of that project? Project Hifazat. Take a note of it. And this International Women's Day observed on 8th of March. Next, in what denomination Union Minister for Home Affairs Amit Shah has launched a commemorative coin to mark 150th birth anniversary of Acharya Bhagwat Shri Buddhi Sagar Surishwar Maharaj during Akhand Anand Mahotsav event held in Ahmedabad in March 2025. So the denomination is to mark 150th birth anniversary. So the coin was also of 150 rupees. Next, Finance Minister of Assam Ajanta Niyog presented a budget worth 2.63 lakh crore rupees for FY26 in March. How much monthly financial assistance will be provided to students graduating from government universities and colleges 2025 under the new scheme Chief Minister's Jibon Prerna? It is 2,500 rupees. Right, and the budget expenditure of the state saw an increase of 250%, while capital expenditure increased to 24,964 crore rupees in FY25. Next, what is the total budget outlay presented by Maharashtra's Deputy Chief Minister and Finance Minister Ajit Pawar for FY26? It is 7.2 lakh crore rupees. Next, in which state Union Minister for Health and Family Welfare JP Nadda launched 2 welfare schemes for girl children during the 2nd anniversary celebration of Bharatiya Janata Party led government in March 2025. It is Tripura state. Next,
In March, Deputy Chief Minister Chonma Main unveiled the Arunachal Pradesh budget for FY26, allocating a total expenditure of 39,842 crore rupees, reflecting a 11.16% increase from the last year. And also, FY26 has been declared as the year of human capital. Next, what was the total outstanding amount of individual housing loans in India as on 30th of September as per the National Housing Bank's report on trends and progress of housing in India 2024. So what was the total outstanding amount? It is 33.53 lakh crore rupees. Next, what is the total outlay of the tax-free budget presented by Puducherry's Chief Minister N. Rangaswamy for FY26? So what is the budget here? Budget being 13,600 crore rupees. Next, where was the AI-enabled data center campus operated by Cifify Infit Space Limited inaugurated in March 2025? Inaugurated in Noida, Uttar Pradesh. Next, students, let's move to the homework section. First, what is Operation Tikka? Tell me what is Operation Tikka. Second, tell me recently who received the Lata Dinanath Mangeshkar Award. Right? Then third question, tell me recently where was the Asian Yogasana Championship started and which edition of this championship was held recently. Fourth question, tell me recently who has won the Copa del Rey title. Which edition of this Copa del Rey was held? Which two clubs were in the final and who won? Fifth question, tell me recently when do we observe the World Malaria Day? Which edition of this day was observed and the theme for this day? So these are your 5 homework questions and I want the maximum participation from all the students who are watching this video. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 13 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे जो कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज़ की गई है। 3 रिपोर्ट्स रहेंगी। ये हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। कितने डेथ्स रजिस्टर किए गए, कितनी बर्थ्स रजिस्टर्स किए गए, राइट, उनके ऊपर ये रिपोर्ट रहेगी। देन हम बात करेंगे 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की जिनको 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके 10 साल पूरे हो गए हैं। देन हम बात करेंगे स्नो लेपर्ड की, राइट, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में डेंसिटी इंडिया में देखने को मिली, कहाँ देखने को मिली वो डिस्कस करेंगे। देन यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी के द्वारा नॉन फेरस मेटल्स को बूस्ट करने के लिए, इसके रिसाइकलिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इंडिया में इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। इन सभी चीज़ों को हम आज की वीडियो में मैनी मोर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, तो एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए जुड़े हमारे साथ तो सब्सक्राइब जरूर करना। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सभी के साथ एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। एक और चीज स्टूडेंट्स, हम सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करते हैं, तो ये वीडियो जरूर देखा करो। इससे आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी, काफी चीजें रिवाइज होंगी, डे टू डे आप अपडेट रहोगे एंड काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास राणा। We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स।
आरजीआई, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं। इनके द्वारा 3 रिपोर्ट्स रिलीज की गई हैं, सीआरएस, एसआरएस एंड एमसीसीडी, राइट। सबसे पहले देखते हैं ये सीआरएस, एसआरएस एंड एमसीसीडी है क्या। सीआरएस बेसिकली होता है आपका सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सिविल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट, राइट, या फिर हम बोले सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, राइट। तो ये 2021 की ये रिपोर्ट रिलीज की गई। ये तीनों रिपोर्ट बेसिकली 2021 का डाटा सिग्निफाई करती हैं। तो ये सीआरएस बताता है कि जो भी रजिस्टर्ड डेथ्स एंड बर्थ्स हैं इंडिया में उसको, एसआरएस बताता है सीआरएस प्लस जो कि अनरजिस्टर्ड बर्थ्स हैं एंड अनरजिस्टर्ड डेथ्स हैं उनको इंक्लूड करता है यहाँ पे इन एसआरएस, राइट। एंड एमसीसीडी क्या है, ये सभी को कैप्चर करता है, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सीआरएस डेथ्स वेयर डेथ्स आर मेडिकली सर्टिफाइड, राइट। तो ये 3 डाटा यहाँ पे अभी रिलीज हमें देखने को मिला, ये जो कि रिलीज किया गया है किसके द्वारा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर बोला गया कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया में ये हमें ड्रॉप होती हुई दिखी, मतलब गिरती हुई दिखी है। अगर हम बात करें इस डाटा की, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया में वो हमें कम होती हुई दिखी, एंड जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट अ बर्थ वो 69.8 ईयर्स यहाँ पे रजिस्टर की गई बिटवीन 2017 से 2021 के बीच में, राइट। यहीं पे अगर हम देखें जो डेथ रेट एंड बर्थ रेट है, स्पेसिफिकली अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो इंक्रीज होता हुआ दिखा फ्रॉम 6.4 टू 7.9, राइट। एंड सिटीज में इट इंक्रीज्ड फ्रॉम 5.1 टू 6.6 2020-21 के बीच में। अगर बर्थ रेट की बात करें ये डिक्लाइन होता हुआ दिखा एट ऑल इंडिया लेवल, ड्रॉपिंग फ्रॉम 36.9 इन 1971 टू जस्ट 19.3 इन 2021। वहीं पे अगर मैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो की बात करूं, राइट, तो अगर हम ये देखें तो इस रिपोर्ट के हिसाब से जो 2019 से 21 के बीच में 93 डेथ्स हमें देखने को मिली पर 1 लाख बर्थ्स, राइट। एंड यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली है, राइट, बेसिकली क्योंकि 2019-21 में इतनी थी। वहीं पे अगर हम देखें 2014-16 में ये 130 डेथ्स पर 1 लाख बर्थ्स था, मतलब कहीं ना कहीं जो मैटर्न मोर्टेलिटी रेशो है वो कम होता हुआ दिखा। वहीं पे अगर हम देखें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशो, राइट, ये भी हमें कम होता हुआ दिखा, जो कि अब सिर्फ 27 रह गया है लाइव, 27 पर 1000 लाइव बर्थ रह गया 2021 में, करेक्ट। एंड सबसे ज़्यादा हमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो अगर देखने को मिले, असम में हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो अमंग द इंडियन स्टेट्स नेक्स्ट टू मध्य प्रदेश। एक और चीज़ अगर हम बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, कितने साल तक हम जीते हैं, राइट, वो देखें तो एज अ होल इंडिया में ये ड्रॉप होता हुआ दिखा फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 50 ईयर्स, जो कि 0.2% से 0.2 ईयर से कम होता हुआ दिखा है, राइट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट 69.8 जो हमने अभी देखा। वहीं पे जो सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाईएस्ट है दिल्ली में एट 73 ईयर्स, एंड मेल्स में एंड फीमेल्स में केरला में है जो कि है 77.9 ईयर्स। छत्तीसगढ़ में सबसे कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की जिसको अभी 10 साल पूरे हो गए हैं। ये मई में लॉन्च की गई थी 2015 में बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, राइट, एग्जैक्ट बोलें तो 9 मई को ये लॉन्च की गई थी। ये स्कीम आपकी ऑफिशियल या फिर हम बोलें ये स्कीम आपकी अफोर्डेबल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है सभी को जो कि अंडरसर्व्ड एंड वनरेबल सेक्शन है सोसाइटी के। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, ये प्रोवाइड कराता है लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीजन। इसको मैनेज किया जाता है LIC के द्वारा एंड 18 से 50 साल के बीच में लोग यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, राइट, ये 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी के लिए प्रोवाइड कराता है एट अफोर्डेबल प्रीमियम ऑफ जस्ट 2 रुपीज़ पर मंथ। एज लिमिट यहाँ पे क्या रहती है 18 से 70 साल। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है अटल पेंशन योजना। इस योजना का मेन एम है कि क्रिएट की जा सके एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम सभी इंडिविजुअल्स के लिए, सभी इंडियंस के लिए। इसको PFRDA के द्वारा मैनेज किया जाता है एंड 18 से 40 साल तक के लोग यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्कीम है, इनको 10 साल पूरे हो गए, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स रहेंगी। इसके बाद आ जाते हैं लद्दाख ने रिकॉर्ड किया वर्ल्ड के हाईएस्ट स्नो लेपर्ड डेंसिटी को, पॉपुलेशन को विद
477 इंडिविजुअल्स डिस्कवर किए गए। कहां पर स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो हेमिस नेशनल पार्क में ये पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, हेमिस नेशनल पार्क में। अगर इंडिया में देखें तो 709 इंडिविजुअल्स हैं आपके स्नो लेपर्ड के, एंड हाईएस्ट कहां पर है, लद्दाख में देखने को मिलते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर जी किशन रेड्डी जी, इन्होंने लॉन्च किया एक पोर्टल टू बूस्ट द नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग इकोसिस्टम। तो जो नॉन फेरस मेटल्स होते हैं राइट, उनकी रिसाइकलिंग के लिए एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाने की बात की जा रही है, एंड ये सब किया जाएगा बेसिकली ताकि जो रिसोर्स एफिशिएंसी है वो बढ़ सके, एक प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड डाटा बन सके, एंड जो भी स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पर उनको ट्रांसपेरेंसी उनको मेंटेन की जा सके एंड उनको एम्पावर किया जा सके राइट। यहाँ पे रिसाइकलिंग होगी जैसे मेटल सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, जिंक एंड अदर क्रिटिकल मिनरल्स की। परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग की जाएगी ताकि इस सेक्टर की एफिशिएंसी को इवेल्युएट किया जा सके, एंड जो भी गैप है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा एंड उनको एलिमिनेट किया जाएगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं सी डॉट एंड CSIR के आर्म NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, इनके द्वारा MOU साइन किया गया क्वांटम एंड क्लासिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए। देखो हम जानते हैं हम क्वांटम के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर, आप क्वांटम कंप्यूटर्स देख रहे हैं, हमने नोबेल प्राइज देखा था क्वांटम एंटेंगलमेंट के राइट। तो क्वांटम होता क्या, बहुत छोटे स्केल पे जब हम चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं राइट। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी की मदद से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो सकता है, एंड इसी के लिए यहाँ पे MOU साइन किया गया कि कैसे हम एडवांस टेक्नोलॉजीज को, एडवांस कंप्यूटेशन, एडवांस क्वांटम टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके अपनी कम्युनिकेशन को और बेटर कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे इस MOU में सी डॉट जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ये अपना नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड क्वांटम कम्युनिकेशन का जो एक्सपर्टीज है वो लाएगा, एंड CSIR का आर्म NPL यहाँ पर साइंटिफिक मेजरमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को स्टडी करके उनके ऊपर जो इनकी स्पेशलिटी है उसके ऊपर लाएंगे ताकि इसको आगे ले जाया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंटरनेशनल अफेयर स्टूडेंट्स, वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिली, वॉशिंगटन DC USA में हुई। पिछले 20 साल से हर बार ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है वॉशिंगटन DC में राइट। 5 से लेके 8 मई तक ये इनिशिएटिव या फिर ये कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिली थी, एंड यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। इसी के दौरान एक थीम याद रखेंगे, सिक्योरिंग लैंड टेन्योर एंड एक्सेस फॉर क्लाइमेट एक्शन मूविंग फ्रॉम अवेयरनेस, ये थीम रहेगी इस इवेंट की, एंड इसी इवेंट के दौरान हमारी कंट्री को एज अ कंट्री चैंपियन डिक्लेयर किया गया। रीजन बीइंग कि हम जो अपनी लैंड्स को लेके जो हमारा एक इंडिया का इनिशिएटिव है या फिर इंडिया का जो एक प्रोग्रेस है, जो इंडिया की गाइडलाइंस है, रूल्स हैं, फ्रेमवर्क हैं राइट, अपने लैंड को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, लैंड रिफॉर्म्स को लाने के लिए, मैपिंग के लिए, डिजिटाइज करने के लिए लैंड रिकॉर्ड्स को, ये इनको यहाँ पे हमारी कंट्री को एज अ कंट्री चैंपियन घोषित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस के दौरान जो कि वॉशिंगटन DC में हुई थी, किस कंट्री को एज अ कंट्री चैंपियन डिक्लेयर किया गया, वो है हमारा कंट्री इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, पाकिस्तान ने लॉन्च किया ऑपरेशन बुनियान अल मॉर्सस अगेंस्ट इंडिया। देखो इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया था अगेंस्ट पाकिस्तान जो है ऑपरेशन सिंदूर राइट, उसके रिटेलिएशन में ही पाकिस्तान ने ये लॉन्च किया है, हम बेसिकली इसको याद रखेंगे। मूविंग ऑन, इसके बाद आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। RBI ने रिलैक्स किया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के नॉर्म ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स टू बूस्ट फॉरेन इनफ्लोज। बेसिकली क्या किया गया है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ला सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें, इसके लिए यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक क्या होता था, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है ना, वो अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते थे राइट, तो उनको 1 साल का मैच्योरिटी पीरियड रहता था उनका यहाँ पे, एंड उनकी जो कैपिटल थी वो 30% से ज़्यादा यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे राइट, उसको हटा दिया गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या की गई है कि जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं राइट, जो कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा, उसकी लिमिट 15% रखी गई थी ऑफ प्रिवेलिंग इन्वेस्टर्स फॉर लॉन्ग टर्म FPIs एंड 10% बाकी इन्वेस्टर्स के लिए, इनको यहाँ पे हटा दिया गया है। इससे होगा क्या कि अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर यहाँ पे बढ़ सकेगा इंडिविजुअल्स का इन बॉन्ड्स में, एंड फ्रीली ये अक्रॉस द मैच्योरिटी कर्व या फिर बिजली जो भी टेन्योर रहेगा इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का, उस तक यहाँ पे ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स उन बॉन्ड्स को होल्ड कर सकेंगे।
चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है भूटान ने लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला नेशनल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम। इससे होगा क्या, भूटान अब इजीली डिजिटल क्रिप्टो करेंसीज की मदद से यहाँ पे पेमेंट रिसीव कर सकेगा अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे बाइनेंस की मदद से, बाइनेंस पे राइट, ये एक बाइनेंस एप्लीकेशन है, उनकी मदद से इन्होंने डीके बैंक ऑफ भूटान के साथ टाई अप किया, जो कि भूटान का पहला फुल्ली डिजिटल बैंक है, ताकि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके इन भूटान। इससे होगा क्या, कोई भी अगर टूरिस्ट बाहर से आएगा, अब वो बाइनेंस एप्लीकेशन की मदद से, बाइनेंस पे की मदद से इजीली भूटान में पेमेंट कर सकेगा, राइट। जहां पर आप देखेंगे बीटीसी, आप बीएनबी कॉइन, मोर देन 100 करेंसी से आप पे कर सकेंगे, इथीरियम, टेथर आपका, राइट, एंड यूएसडीसी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर कॉइन। तो इससे आप यहाँ पे एयरलाइन टिकट्स, वीज़ा फीस, होटल बुकिंग्स, टूर गाइड्स, लोकल परचेजेस कर सकेंगे एंड क्यूआर कोड की मदद से यहाँ पे इजीली आप पेमेंट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। आरबीआई ने रिकॉग्नाइज किया FIIM DA को एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर फाइनेंशियल मार्केट। अब ये SRO हो गए हैं, इससे होगा क्या, एज अ रिकॉग्नाइज्ड SRO इनको अब एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बन जाएगी एंड इनकी नेटवर्थ होनी चाहिए मिनिमम 10 करोड़ रुपीस, डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डिंग चाहिए एंड किसी भी एक एंटिटी में 10% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल इनका नहीं होना चाहिए, करेक्ट। एंड अब ये SRO बन गया, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। मूविंग ऑन, इकोनॉमी एंड बिजनेस पर आते हैं। पोर्टर ये इंडिया का 3rd यूनिकॉर्न बन गया 2025 का। इन्होंने अभी $200 मिलियन रेज किए इन सीरीज एफ राउंड। सीरीज एफ राउंड मतलब ये छठा राउंड था इनका फंडिंग का एंड इन्होंने $200 मिलियन यहाँ पे रेज किया, जिससे अब ये यूनिकॉर्न बन गए हैं। यूनिकॉर्न क्या होता है, जब एक कंपनी की मार्केट कैप $1 बिलियन से ज्यादा हो जाती है या फिर $1 बिलियन को टच कर जाती है, देन इट बिकम्स अ यूनिकॉर्न, करेक्ट। तो पोर्टर करता क्या है, गुड्स को एक जगह से ले जाता है दूसरी जगह तक, राइट। आपको खुद नहीं ले जाना होता, आप किसी को हायर कर सकते हैं। छोटे से छोटे गुड से लेके बड़े से बड़ा गुड आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं, राइट। एक पेन, पेंसिल, बुक्स, किताब, कुछ भी आप जो चाहें, राइट। आपको अपना लैपटॉप ट्रांसफर कराना है या फिर कोई फोन ट्रांसफर करना है या फिर आपको कोई चाबी भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है, तो आप इसकी मदद ले सकते हैं, राइट। टेक अ नोट ऑफ इट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कर्नाटका एंड इन स्पेस। इन्होंने 2 MOU साइन किए ताकि स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को एस्टेब्लिश किया जा सके, जो कि स्पेस टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करेगा। यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती हुई हमें देखेगी स्पेस टेक्नोलॉजीज में। एंड अगर आपको याद हो तो स्पेस सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो FDI था वो भी 100% अलाउ कर दिया था, क्योंकि स्पेस हम देख रहे हैं आज का टाइम पे बडिंग एक इवेंट है या फिर बडिंग सेक्टर है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं स्पेस को कैप्चर। स्पेस पे आर्टेमिस अकॉर्ड अगर आपको याद हो वो क्या था कि पीसफुल एक्सप्लोरेशन होना चाहिए स्पेस का। तो स्पेस में हम मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं इलॉन मस्क के द्वारा। मून पर हम देख रहे हैं कि ट्रेन बनाने की, ट्रेन स्टेशंस बनाने की बात की जा रही है, माइनिंग की बात की जा रही है, वहाँ पर खुद अपनी एक सिटीज़ बनाने की भी बात की जा रही है। तो बहुत सारी इन्वेंशंस हो रही हैं, बहुत सारा काम किया जा रहा है स्पेस सेक्टर के ऊपर। इसीलिए यहाँ पे इंडिया में कर्नाटका ने एंड इन स्पेस ने यहाँ पे MOU साइन किया ताकि एक स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क एंड एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश किया जा सके, जहाँ पे लोगों को ट्रेन भी किया जाएगा, स्किल्स भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। नेक्स्ट एक्विजिशंस एंड मर्जर्स पर आते हैं। जापान के SMBC जो कि जापान का 2nd लार्जेस्ट बैंक है, इन्होंने 20% स्टेक बाय किया है येस बैंक में फॉर अराउंड 13,483 करोड़ रुपीस। यहीं पे हम देखेंगे SBI ने अपना स्टेक डाइवर्स्ट किया, 13.19% स्टेक सेल किया है 8,889 करोड़ की लागत से, राइट। मूविंग ऑन, येस बैंक की अगर मैं बात करूं तो येस बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, प्रशांत कुमार। हेडक्वार्टर कहां पर है इनका, मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इसको 2004 में स्टैब्लिश करा गया था। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। इलॉन मस्क की स्टारलिंक इन्होंने अभी अप्रूवल रिसीव किया है ताकि ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इन्होंने जियो के साथ एंड एयरटेल के साथ पार्टनर किया है ताकि इस इंटरनेट को, सैटेलाइट इंटरनेट को लोगों तक पहुंचाया जा सके। एंड ये जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है, इसके लिए 3 साल पहले यहाँ पे स्टारलिंक ने अप्लाई किया था एज एन ऑपरेटर लाइसेंस, जो यहाँ पर अभी लागू होता हुआ हमें दिख रहा है। स्टारलिंक के पास 7,000 से भी ज़्यादा लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं, जो कि इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं विराट कोहली। इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है टेस्ट क्रिकेट से आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ टेस्ट करियर। ये कितने साल के हैं विराट कोहली, अगर हम देखें ये 36
साल ईयर्स के हैं। 123 इन्होंने टेस्ट मैच खेले हैं जिनमें इन्होंने 9230 रन बनाए हैं, जिसमें 30 सेंचुरीज रहेंगी एंड 31 हाफ सेंचुरीज रहेंगी। इनका जो डेब्यू हुआ था टेस्ट क्रिकेट में 2011 में हुआ था अगेंस्ट जमाइका। फिर इनको कई अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इनको आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था 2018 में। देन आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर से 2012 में, 2017 में, 2018 में। देन आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड से 17-18 में, अर्जुना अवार्ड से 2012 में, पद्माश्री से इनको 2013 में सम्मानित किया जा चुका है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं, ब्राजील होस्ट करेगा फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 में। टेक अ नोट ऑफ दिस, 24 जून से 25 जुलाई तक ये इवेंट हमें देखने को मिलेगा एंड ब्राजील पहली कंट्री बन गई है जो होस्ट करेगी फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप इन साउथ अमेरिका। अगर आपको याद हो तो ब्राजील के पास ही अभी ब्रिक्स की समिट भी है, ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भी है। नेक्स्ट आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पे। एसपी शर्मा की बुक है इंडिया एट 2047 लीडिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये रिलीज की गई। ये बुक बेसिकली बताती है कि इंडिया के 100 साल पूरे हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के इन द ईयर 2047, हम कितने डेवलप हो जाएंगे, क्या हमारी इकोनॉमिक कंडीशन होगी। एंड हम जानते ही हैं इंडिया एक डेवलप नेशन बनना चाहता है बाय 2047, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 10 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है एंड इनके हैबिटेट को, इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। साल में ये डे 2 बार ऑब्जर्व किया जाता है। पहले जनरली ये डे सेकेंड सैटरडे ऑफ मई मंथ एंड अक्टूबर मंथ ऑब्जर्व किया जाता है। मई में 10 मई को ऑब्जर्व किया गया एंड अक्टूबर में 11 अक्टूबर को ये ऑब्जर्व किया जाएगा। इसकी थीम याद रखेंगे, क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज, ये यहाँ पे थीम रहेगी। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल अर्गेनिया डे। 10 मई को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। अर्गेनिया बेसिकली एक ट्री होता है, राइट, ये आपका जनरली पाया जाता है इन सब सारन रीजन ऑफ मोरक्को, जो कि एक एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज होता है एंड इनका जो मेजर रोल है, राइट, ये नेटिव स्पीशीज में इनको प्रिजर्व करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 11 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड टेक्नोलॉजी कैसे हमारे वर्ल्ड को, डे टू डे लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है, बेटर बनाती है, उसके बारे में ये डे ऑब्जर्व कराता है। 27वां एडिशन इस बार हमने ऑब्जर्व किया नेशनल टेक्नोलॉजी डे का। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी एक थीम याद रखेंगे, यंत्रा, युगंत्रा फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वैसाख और बुद्ध पूर्णिमा। 12 मई को ये डे ऑब्जर्व किया गया 2025 में। जनरली ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द फुल मून डे इन मई मंथ, राइट। इस बार 12 मई को ऑब्जर्व किया गया एंड इस बार 2587th बर्थ एनिवर्सरी थी ये आपकी गौतम बुद्धा जी की, राइट। एंड गौतम बुद्धा की जो टीचिंग थी उसको प्रमोट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार इस डे को सन 2000 में ऑब्जर्व किया गया था। फिर आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ पे स्टूडेंट्स। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एंड वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा जी के द्वारा मिलकर यहाँ पे 2 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए, यूपी अग्रीज एंड एआई प्रज्ञा। अब ये यूपी अग्रीज क्या है, बेसिकली ये एक इनिशिएटिव है जिसका एम रहेगा कि एग्रीकल्चर को रेवोल्यूशनाइज करना है 21 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफ बुंदेलखंड एंड पूर्वांचल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। 4000 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट किए जाएंगे, जिसमें से 2737 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक देगा एज अ लोन, बाकी गवर्नमेंट ऑफ यूपी यहाँ पे प्रोवाइड कराएगी। एंड जो ये लोन रिपेमेंट करेगा 35 साल में यहाँ पे लोन देना है विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 1.23%। इसके बाद आ जाते हैं एआई प्रज्ञा। ये इनिशिएटिव है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए 10 लाख यूथ को यहाँ पे ट्रेनिंग कराएंगे एआई के ऊपर, ताकि इनको डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड कराई जा सके, आज की स्किल्स प्रोवाइड कराई जा सके एंड ये जॉब रेडी हो सके इन इंडस्ट्री जैसे एआई, एमएल, डाटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, इन में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए। करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब चलते हैं कुछ रिविजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इन मार्च सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज डैश एंड डैश इनको अपग्रेड किया गया टू नवरत्ना स्टेटस। तो आईआरसीटीसी एंड आईआरएफसी इन दोनों को अभी नवरत्ना स्टेटस यहाँ पे ग्रांट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। आईआरसीटीसी 25th एंड आईआरएफसी 26th नवरत्ना बनी। तो राइट ऑप्शन 4th। नेक्स्ट
How much funding that the government of India approved for Arunachal Frontier Highway project, making it the largest road project ever sanctioned in India? तो कितनी फंडिंग अप्रूव की गई है? 42,000 करोड़ रुपीस की फंडिंग यहाँ पे अप्रूव की गई है. नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द चैनल जो रिसेंटली लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एट द NXT कॉन्क्लेव इन दिल्ली. तो वो है न्यूज़ एक्स वर्ल्ड. नेक्स्ट, इन फरवरी द चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व जो कि असम में है, इसको डेजिग्नेट किया गया एज द 8th नेशनल पार्क इन द स्टेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम. पूछा जा रहा है इट वॉज नेम डैश डैश आफ्टर बोडो लेजेंड हु फॉट इन द एंग्लो भूटान वार ऑफ 1865. तो किन के नेम के बिहाफ पे इसको रखा गया? सिक्वाना ज्वालो नेशनल पार्क. नेक्स्ट, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इनॉग्रेटेड इन मार्च. तो ये गुरुग्राम हरियाणा में इनॉग्रेट किया गया है, राइट, अंडर द लीडरशिप ऑफ द फाउंडर ऑफ अमीषा विश्व भारती जैन आचार्य लोकेश मुनि जी. नेक्स्ट आ जाते हैं किस स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया अबुआ बजट फॉर FY26 अमाउंटिंग टू 1,45,400 करोड़ रुपीज, जो सिंपलाइज करता है इनकी कमिटमेंट टू द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल. तो विच स्टेट इंट्रोड्यूस दिस अबुआ बजट? तो किस स्टेट के द्वारा ये प्रेजेंट किया गया? झारखंड के द्वारा ये बजट प्रेजेंट किया गया. नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल बजट अमाउंट प्रेजेंटेड बाय बिहार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी फॉर FY26? 3.17 लाख करोड़ रुपीज़ का बजट यहाँ पे अलोकेट किया गया. नेक्स्ट आ जाते हैं किस मिनिस्ट्री ने इशू की गाइडलाइंस फॉर इंप्लीमेंटिंग 5 पायलट प्रोजेक्ट्स इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू यूज हाइड्रोजन फ्यूल्ड बसेज एंड ट्रक्स अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. तो किस मिनिस्ट्री ने इशू की गाइडलाइंस? तो वो मिनिस्ट्री रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. नेक्स्ट, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी इन मार्च 2025. तो गुजरात स्टेट में यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया ये इंडिया का पहला AI पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन. नेक्स्ट, टोटल बजट प्रेजेंटेड बाय मिजोरम्स चीफ मिनिस्टर पीयू लाल दहोमा फॉर FY26 इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कितना रहेगा? तो वो बजट है 15,198.76 करोड़ रुपीस का. एंड इनकी स्कीम बाना केया स्कीम, जिसको हम बोलते हैं हैंड होल्डिंग स्कीम, उसके लिए एलोकेट किया गया है. नेक्स्ट, नेम द जियो हेरिटेज ऐप जो कि लॉन्च की गई यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस जी किशन रेड्डी जी के द्वारा ड्यूरिंग 175th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑन 4th ऑफ मार्च. तो उस एप्लीकेशन का नाम पूछा गया, वो है भू विरासत. नेक्स्ट, मेंशन द इनिशिएटिव जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा टू एनहेंस वीमेन पार्टिसिपेशन सेफ्टी एंड लीडरशिप इन लोकल गवर्नेंस. वो है मॉडल वीमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत. नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल एनवायरनमेंट स्ट्रेटजीज, जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा 12वां रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक, जो कि राजस्थान में हुआ 3 से 5 मार्च तक. तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? वो है यूनाइटेड नेशंस सेंटर फॉर रीजनल डेवलपमेंट. नेक्स्ट आ जाते हैं इन मार्च नीति आयोग ने किनके साथ कोलैबोरेट करके फ्रंटियर टेक हब को लॉन्च किया एंड द स्ट्रेटेजिक पेपर क्वांटम कंप्यूटिंग नेशनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशन स्ट्रेटेजिक प्रिपेयरनेस, ये लॉन्च किया गया ताकि इंडिया के इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ में क्वांटम टेक्नोलॉजीज का हाथ हो सके. तो यह है डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. फिर आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस निर्मला सीतारमन जी एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी जी. इन दोनों के द्वारा मिलकर न्यू क्रेडिट असेसमेंट मॉडल को लॉन्च किया गया बेस्ड ऑन डिजिटल फुटप्रिंट स्कोरिंग मार्च में. पूछा जा रहा है ये जो मॉडल है इसका एम रहेगा टू सपोर्ट विच सेक्टर? तो ये MSME सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस अलॉन्ग विद इंडिया SME फोरम, इन्होंने लॉन्च किया अ मिलियन वीमेन अराइज इनिशिएटिव इन मार्च टू एम्पावर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया. तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने? वो है नीति आयोग ने यहाँ पे ये अलॉन्ग विद इंडिया SME फोरम लॉन्च किया अ मिलियन वीमेन अराइज इनिशिएटिव को. नेक्स्ट आ जाते हैं द कैबिनेट ऑफ असम रीनेम्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक सिटी इन जागीरोड मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट. क्या इसको रीनेम करके क्या किया गया? किन के बिहाफ पे? रतन टाटा जी, लेट रतन टाटा जी की नेमिंग की गई है के बिहाफ पे, जो कि रखा गया रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी. इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मार्क करेंगे इसको. नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिन्होंने पार्टनर किया सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के साथ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर टू होस्ट द 5th एडिशन ऑफ लाइनमैन दिवस ऑन 4th ऑफ मार्च 2025. तो यह है टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड. नेक्स्ट, टोटल आउटले ऑफ नागालैंड स्टेट बजट पूछा गया फॉर FY26 कितना रहेगा? वो है 24,849 करोड़ रुपीस. नेक्स्ट,
Which of the following UT presented 1.12 lakh crore rupees budget for FY26 with a focus on a zero deficit plan in March 2025? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर. Next, Madhav National Park of which state recently declared as the 58th Tiger Reserve of India, also marking it as the 9th Tiger Reserve in that state. तो ये है मध्य प्रदेश. नेक्स्ट, अभी अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने डिलीवर किया पहला रियर फ्यूसलेज टू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. किसके लिए? फॉर मार्क 1A फाइटर जेट, जो कि लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट रहेगा. नेक्स्ट है, व्हाट वाज द टोटल बजट आउटले प्रेजेंटेड बाय द कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी फॉर FY26? तो ये 4.09 लाख करोड़ रुपीस का बजट था. नेक्स्ट आ जाते हैं, उस इनिशिएटिव का नाम बताओ जो कि पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था मार्च महीने में, ताकि वीमेन को प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम वायलेंस ऑन द ईव ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डेज को लॉन्च किया गया था, जो कि था 8 मार्च को. तो उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? प्रोजेक्ट हिफाजत. नेक्स्ट है, किस डिनोमिनेशन का अभी एक कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया अमित शाह जी के द्वारा ऑन 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आचार्य भगवंत श्री बुद्धि सागर सुरेश्वर महाराज जी ड्यूरिंग द अखंड आनंद महोत्सव इवेंट, जो कि अहमदाबाद में हुआ मार्च 2025 में. तो 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है, तो 150 रुपीज़ का कमेमोरेटिव कॉइन था ये. नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ असम अजंता नियोग इन्होंने प्रेजेंट किया बजट वर्थ 2.63 लाख करोड़ रुपीज़ फॉर FY26. क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ मच मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग फ्रॉम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन 2025 अंडर द न्यू स्कीम चीफ मिनिस्टर्स जिबॉन प्रेरणा स्कीम. तो मंथली इंसेंटिव कितना रहेगा? 2500 रुपये का. नेक्स्ट, टोटल बजट बताओ बाय महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो लॉन्च किया गया एंड फाइनेंस मिनिस्टर अजीत पवार जी फॉर FY26. तो बजट कितना है? 7.2 लाख करोड़ रुपीज़ का. नेक्स्ट, इन विच स्टेट यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर JP नड्डा जी ने 2 स्कीम लॉन्च करी फॉर गर्ल चिल्ड्रन ड्यूरिंग सेकेंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट इन मार्च 2025. तो त्रिपुरा में ये 2 स्कीम लॉन्च की गई हैं. नेक्स्ट, इन मार्च डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चौमा मेन इन्होंने अनवेल किया अरुणाचल प्रदेश स्टेट बजट फॉर FY26 अलोकेटिंग अ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 39,842 करोड़ रुपीज रिफ्लेक्टिंग अ 11.16% इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस ईयर. Next students, let's move to the homework section. First, what is Operation Tikka? Tell me what is Operation Tikka. Second, tell me recently who received the Lata Dinanath Mangeshkar Award. Right? Then third question, tell me recently where was the Asian Yogasana Championship started and which edition of this championship was held recently. Fourth question, tell me recently who has won the Copa del Rey title. Which edition of this Copa del Rey was held? Which 2 clubs were in the final and who won? Fifth question, tell me recently when do we observe the World Malaria Day? Which edition of this day was observed and the theme for this day? So these are your 5 homework questions and I want the maximum participation from all the students who are watching this video.